and visible to all of you? So guys, if I am audible and visible to all of you, please give a thumbs up in the comment section so that we can begin this particular session. So I'm getting the responses here. So guys, let's begin the session. So once again, a warm welcome to all of you in the today's session on EduTap, in which we are going to cover the top 40 MCQs from the month of May 2023. And guys, this is the part 2 of this particular series, in which we will be covering the top 40 MCQs from the past 1 week of the May 2023. And these questions are relevant for RBI Grade B, NABARD Grade A, as well as the SEBI Grade A exam. So guys, when I talk about this particular session, this session is going to be a rapid fire one, and I really believe that all of you must have pulled up your socks for the RBI Grade B officer exam and you are really preparing well. And guys, in this session, let's check that what exactly your levels of preparation are. So but before starting this session, we have a very good news for all of you, that we are providing the comprehensive guidebooks to the aspirants of RBI Grade B, NABARD Grade A, as well as the SEBI Grade A exam. So these guidebooks guys provides you the definitive answers to all your queries. It can be related to the body in which you are targeting to enter, it can be about the exam, and it can be about the preparation. For example, when I talk about the body, for example, you are targeting to enter to Reserve Bank of India. So what is the role exactly that RBI plays in the Indian economy? Now when I talk about the exam, so what is the eligibility criteria, what is the detailed syllabus, then what are the different sections, what are the different phases of the exam. Now when I talk about the preparation, so what exactly are the sources that you must follow in order to clear the exam. So these are the relevant things which are being provided to you in a definitive manner in these particular guidebooks. So what are you waiting for? Kindly download this guidebooks from the link given in the description of this particular session. Now let's get back to the session. So guys, here we are going to cover the top 40 MCQs, and you are required to tell me that what exactly your score was out of 40 in this particular session, and I want all of you to score 40 out of 40 in this session. So guys, let's begin the session with the very first question here on the screen. So the very first question is on the NMIS, that is the National Manufacturing Innovation Survey 2021-2022. So guys, whenever we talk about such kind of surveys, the very most important thing is that what exactly is the releasing body, that is the very first dimension. So please tell me in the comment section that what exactly is the name of the body which has released this particular part. Here you can see the question. NMIS is a joint study by the Department of Science and Technology and dash. So what exactly the appropriate value which will fill this particular dash, and apart from that you are also required to tell me the name of the state which has ranked most innovative state by the National Manufacturing Innovation Survey. So let me see who will tell me the right answer. Please be quick and tell me the right answer in the chat box that you think is the right answer. So here I am getting the right answers from the people. Some are saying option D, some are saying option A. So guys, option A is the absolutely right answer. So Karnataka वो state है जो कि most innovative state है as per this particular survey. और जब हम बात करते हैं NMIS की, it is a joint study between Department of Science and the United Nations Industrial Development Organization. So guys, जब हम बात करते हैं NMIS की, so basically this survey is having two components. So इसके दो component हैं. अगर हम एक component की बात करें तो एक component है इसका firm level survey, और जो दूसरा component है that is SSI, that is sectorial system of innovation. So these are the two components of this survey, and I believe that this is very much clear to all of you. Now let's move on to the next question, and the next question is on the recent target which has been kept by the government of India, and this target is for the food grain production for the 2023-2024 crop year. So guys, please tell me that what exactly is the target which has been set up by the government, which is also a 2.6% increase from the previous year. तो अगर हम बात करते हैं पिछले साल की, तो पिछले साल से 2.6% इंक्रीज हुआ है इस टारगेट के अंदर, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द
current value here it is 332 million tons. That is the right answer for this particular question. और अगर हम यहाँ देख सकते हो आप additional information के अंदर that the goal includes the production of 29.25 MT of pulses, 44 MT of oilseed and 17 MT of the millets. So these are the important points that you must cover. Next question. Next question is basically on the MoU, and whenever there is an MoU we always tell you there are two important points. First one is that what is the aim of the MoU, and second important is the parties between which that particular MoU has been signed. तो आप यहाँ पर देख सकते हो the question is basically between the parties. So ये MoU साइन हुआ है MoHU, that is Ministry of Housing and Urban Affairs, और साथ में एक और बॉडी के साथ, वो आपको बताना है. अगर हम बात करते हैं कि इस अंडर this MoU वो किस पर फोकस करने वाले हैं, so they will be targeting to accelerate solid waste management and the used water management. So let me see who will tell me the right answer to the question number 3. So I can see here most people are saying that option E is the right answer. Priya, Suhas, Kumari, Diksha, Anurav. So all the people have given me the answer. So absolutely option E is the right answer. That is Rights Limited is the right answer. Next question guys, and the next question is basically you are required to tell me the name of the country. तो वो कौन सी कंट्री है जिसको recently इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने फास्ट पेट्रोल वेसल गिफ्ट किया है during his visit to that particular nation? Let me give you a small hint here that the capital of that particular country is Male, and now I think it will be very easy for you to answer this question. So absolutely right guys, it is option C, that is Maldives is the right answer. So Maldives is the country to which India has given this particular gift. Next question is from the defense exercises. So Indian Army ने recently एक exercise की है. It is a training exercise which was held at the high altitude artillery ranges of the Eastern Theater. कौन सी स्टेट के अंदर हुई है, एक्सरसाइज का नाम क्या है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के नाम की, सो एक्सरसाइज नेम इज बुलंद भारत. सो बुलंद भारत इज द राइट आंसर. और जब हम बात करते हैं वेन्यू की, तो दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. सो गाइस इसी तरीके से आपको हमेशा याद रखना होगा डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में कि किसकी एक्सरसाइज थी, कहां पर हुई और क्या नाम था उसका. और इसी तरीके से लेट मी टेल यू अनदर एग्जांपल दैट इज रिसेंटली an exercise was being taken place, that is AIME. अगर हम बात करते हैं AIME की, so it was basically Asian India Maritime Exercise and this was basically a naval exercise. अगर हम बात करते हैं कि कहां पर हुई थी, तो इसका हार्बर फेज हुआ था गाइस सिंगापुर के अंदर. और अगर हम बात करते हैं सी फेज की, तो सी फेज हुआ था इसका साउथ चाइना सी के अंदर. तो इसी तरीके से आपको याद रखना होगा व्हाट एग्जैक्टली आर द इंपॉर्टेंट डिटेल्स. जब भी आपको याद आता है कि कोई क्वेश्चन में देखते हो कोई एक्सरसाइज है, तो प्रीवियस आपने जो एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं उनको भी रिवीजन कर सकते हो आप, सो दैट इट यू आर एबल टू रिटेन देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is on the Currency and Finance 2022-2023 report, and the question is on a very easier line, that is the body which has released this report. तो वो कौन सी बॉडी है जिसने इसको रिलीज किया है? So it is basically the Department of Economic and Policy Research, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है और इसने इसको लॉन्च किया है. एंड गाइस व्हेन आई टॉक अबाउट द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, इट इज टुवर्ड्स ग्रीनर क्लीनर इंडिया. सो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है. और मैं आपको बता दूं, ये जो करेंसी एंड फाइनेंस 2022-2023 रिपोर्ट है, इट इज रिकमेंडेड the ETS, that is emission trading system, which will link with the green taxonomy. तो इसके अंदर क्या करने वाले हैं ये? See guys, let me tell you that this ETS is going to cover all the sectors of the Indian economy, and apart from that, let me tell you that there are two types of industries. There are one type of industry which is least polluting, जो pollution कम करते हैं, और दूसरी हैं that are more polluting industries. तो जो least polluting industries है, they will be given the carbon credits under this, और जो most polluting है, they will be taxed. जो लीस्ट पोल्यूटिंग है उनको सब्सिडी दी जाएगी, और जो मोस्ट पोल्यूटिंग है उनको टैक्स किया जाएगा, एंड दे आर रिक्वायर्ड टू परचेज these carbon certificates. So that's how you can see that these are the really important from the exam point of view. I hope that this is clear to all of you. So now let's move on to the next question. And the next question is once again on one of the initiative, that is the global collection, which is an international collection service for the exporters. तो आपको ये बताना है कि कैश फ्री पेमेंट ने एक एक्स बैंक के साथ मिलकर पार्टनरशिप की है, so that they can offer the global collections, which is an international collection service. And यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो एक्स बैंक है उस बैंक का नाम क्या है. So here you are required to tell me, identify the name of the bank, and I really believe that you will be able to identify exactly guys. It is option D, Yes Bank.
Bank. So Yes Bank is the bank with which Cash Free Payments has made this partnership to offer the global collections. अब अगला क्वेश्चन guys, a very important question because this question is on the World Bank president. ठीक है जी, तो आपको बताना है उन फर्स्ट इंडियन अमेरिकन का नाम who has been recently appointed as the World Bank president. He was earlier nominated by the US President Joe Biden, and now he has finally become the first Indian American to be appointed as the World Bank President. And this is the halwa question for all of you. Why so? Because we have already discussed this question so many times in our sessions. And absolutely right guys, the right answer to this question is option E, that is Ajay Banga. All the people have given me the right answer. So अगर हम बात करते हैं ये किसको replace करने वाले हैं, this is the googly question for you. Please tell me in the comment section the name of the person who will be replaced by the Ajay Banga as the president of World Bank. And absolutely right, it is David Malpass. So guys, all such kind of details are very important to be covered from the exam point of view. Now let's move on to the next question, and the next question is from the obituaries, that is also from the personality which were in news recently. So this time we have the Olympic medalist Tori Boy who passed away recently, and you are required to tell me the name of the country. वो कौन सी country से belong करती हैं ये आपको बताना है chat box के अंदर, and the name of that particular country from which she belongs to is United States. So she is a former Olympic and world champion, and she has passed away recently. So this is the right answer. Now let's move on to the next question guys. So next question is on the Vizag Tech Park. तो आंध्र प्रदेश सीएम ने recently foundation stone रखा है इस टेक पार्क का, and this cost 21,844 करोड़ रुपीस. आपके सामने क्वेश्चन ये है कि वाइजैक टेक पार्क बेसिकली किसकी सब्सिडियरी है? अदानी ग्रुप की, टाटा ग्रुप की, बिरला ग्रुप, रिलायंस ग्रुप एंड पिरामल ग्रुप. And when I talk about that group from which it belongs, it is of Adani Group. Let me tell you that guys, this is one of the biggest such facility in the country. और ये जो data centers यहाँ पर खोलने वाले हैं इसके अंदर, they will run entirely on the green power. So these are the important points that you must remember from the exam point of view. Next question. So Justice TV Shiv Gananam has been appointed as the Chief Justice of the Calcutta High Court. See guys, recently जो भी appointments होती है तो यहाँ से भी एक static question निकल सकता है. For example, this question is a perfect example of such kind of question. जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट यहाँ पर रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, तो आपके सामने क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जो कि अलाउ करता है कि जो हाई कोर्ट के जज हैं दे विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के साथ हाई कोर्ट के जजेस को, बट वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंडर ये होता है? सो दैट इज बेसिकली आर्टिकल 217 जिसके अंडर ये सब अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं. Next question, and the next question is on the Department of Animal Husbandry and Dairying, which has in association with the Department of Fisheries, and which one of the following has organized a nationwide ASDF KCC campaign. Guys, KCC stands for Kisan Credit Card. तो किसान क्रेडिट कार्ड का ये कैंपेन है जिसमें हम एक्सटेंड कर सके स्मॉल फिशर्स और फार्मर्स को ये किसान क्रेडिट कार्ड. दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड. आपके सामने क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और इसमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलकर इस कैंपेन को रिसेंटली लॉन्च किया है? एंड गाइस, इट इज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अलोंग विद विच दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन लॉन्च्ड. अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप केसीसी को पढ़ रहे हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को पढ़ना बेहद जरूरी है. So here, let us briefly discuss this Kisan Credit Card Scheme, which was launched in 1998. Nodal agency की बात करें तो NABARD is a nodal agency for this particular scheme, and it aims to provide timely and adequate credit to the farmers. Farmers अपनी needs को meet कर सके. That is why this particular scheme has been launched. Name of the scheme is Kisan Credit Card Scheme. Let's move on to the next question, guys. So 41 gigawatt of energy storage capacity along with 777 gigawatt of total installed power capacity by 2019 to 2030, 2029 to 2030, according to a recent report on the optimal generation mix. See guys, you can see here such kind of questions will be also asked in the exam. You will be given a long paragraph, and in the end they will be just asking you a simple question that this particular report, this X report was being released, and you are required to tell me releasing body उस report की कौन सी है, इसमें से वो कौन सी organization है जिसने इस report को launch किया है. Only this thing is required to be answered in the question, and here guys, it is Central Electricity Authority, and let me see in the comment section that all the people have given me the right answer. That is Central Electricity Authority, which is the right answer to this question.
सो गाइस क्विकली आंसर कीजिए आप सभी चैट बॉक्स के अंदर, बिकॉज जितना जल्दी आप आंसर करेंगे एंड वी विल बी एबल टू रिवाइज मोर क्वेश्चंस इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम, and so that after that you can also revise the same. Now let's move on to the next question, guys, and the next question is MVITT Lion V273, which was flagged off, and here you are required to tell me the port from where it was flagged off, और वो कौन से पोर्ट पर जाने वाला है. Question is all on these particular lines, and these are the some typical current affairs questions on which questions are being asked in the exam. So जब हम बात करते हैं इसकी, so basically it was the inaugural shipment to operationalize this particular port which has been mentioned in the Rakhine state of Myanmar as a part of Kaladan multimodal transport project. And when I talk about the right answer, it is from Kolkata to Sitwe port, and here you can see also from this particular map that where it is it will be basically going. ठीक है जी, is this clear to all of you? So let's move on to the next question. So India has inaugurated Docky land port to boost trade and tourism. So India ने Docky land port को यहाँ पर inaugurate किया है so that we can boost trade and tourism. But कौन सी country के साथ ये करने वाले हैं? That is the question is all about. Nepal, Myanmar, Bhutan, Bangladesh, China. That is the question, guys, and that the name of that country is Bangladesh. That is option D, Bangladesh. So this is the right answer to this particular question. And let me tell you the state where this particular land port is there. It is in the Indian state of Meghalaya. And Bangladesh border के बीच में ये particular port है. I hope this is clear to all of you. Now let's move on to the next question, that is on the food street project. So food street project यहाँ पर recently launch किया गया है, और आपके सामने question ये है कि बेसिकली इसके अंदर नेशनल हेल्थ मिशन कितना असिस्टेंस देने वाला है पर फूड स्ट्रीट एज अ पायलट प्रोजेक्ट. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अंडर दिस प्रोजेक्ट दे आर गोइंग टू डेवलप 100 हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट्स. तो 100 हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट्स यहाँ पर बनाने वाले हैं, और नेशनल हेल्थ मिशन इसको असिस्ट करने वाला है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द कॉस्ट, इट विल बी ₹1 करोड़ पर फूड स्ट्रीट एज अ पायलट प्रोजेक्ट, एंड दैट इज द राइट आंसर. अगर हम बात करते हैं इस कॉस्ट की, ये जो हमारी रेशियो है, इट विल बी 60:40 और 90:10, with the condition that the branding of these food streets will be done as per the SAI guidelines, and that is the right answer. और ये जो इनिशिएटिव है ये जॉइंटली लॉन्च किया है और इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ मिलकर आरबीआई ने 4th G20 टेक स्प्रिंट हैकाथन लॉन्च किया है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए. सो गाइस जब मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर टेक स्प्रिंट की, इट इज गोइंग टू फोकस ऑन डेवलपिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस फॉर द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए इन्होंने बेसिकली इसको लॉन्च किया है. ठीक है जी, तो आपके सामने क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया है, एंड इट इज द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स विद विच आरबीआई हैज लॉन्च दिस हैकाथन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड रशिया ने रिसेंटली एग्री किया है to explore RuPay and Dash cards for the easy payments in both the countries. तो आपको ये बताना है कि बेसिकली वो कौन सा दूसरा कार्ड है which will be from Russia, जिन दोनों को ये एक्सप्लोर करने वाले हैं. So from Indian side it will be RuPay card, and from the Russian side it will be Mir card, and that is the right answer to the question number 18. Absolutely all the people have given me the right answer to this question. Let's move on to the next question, and here guys you are required to tell me the name of the bank which has introduced a program that is vishesh. और guys इस विशेष प्रोग्राम के अंदर they will be offering a blend of financial and wellness benefits under the shuru areas. And what are these shuru areas? These are semi urban and rural areas. तो यहाँ पर शुरू के ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, प्रोग्राम का नाम पूछा जा सकता है, दैट इज विशेष, और क्वेश्चन के अंदर है कि वो बैंक का नाम क्या है जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया है, एंड द नेम ऑफ द बैंक इज HDFC बैंक. दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. Next question. So guys, one of the Indian embassies in which one of the countries has inked an MoU with the STMHF for the distribution of LPG stoves and cylinders. तो LPG stoves और cylinders के distribution के लिए यहाँ पर MoU हुआ है. अगर हम बात करते हैं STMHF की, so it is basically सुशीला ठाकुर मेमोरियल हेल्थ फाउंडेशन जिसके साथ ये MoU साइन हुआ है. और ये कौन सी कंट्री का है? दिस इज बेसिकली फ्रॉम द कंट्री नेपाल. सो नेपाल के साथ ये MoU साइन हुआ है गाइस. एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने गिवन है, you can just read out on your own. We are moving towards the next question which is here on the screen, and the next question is on the UNESCO World Press Freedom Prize. So guys, these kind of questions are very important from the exam point of view because recent awards जिसको दिए गए हैं
क्यों दिए गए हैं, तो कौन सा अवार्ड था, ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट द यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, इट वाज बेसिकली गिवन टू none of the above which are here given. So when I talk about this, so three imprisoned Iranian women journalists, Nilufar Hamidi, Eli Mohammadi and Nargis Mohammadi, they were be named as the laureates of the 2023 UNESCO World Press Freedom Prize, and that is the right answer to this question. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, तो नासा ने अनाउंस किया है विनर्स ऑफ द 2023 ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज, और आपके सामने क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्ट रिव्यू अवार्ड की कैटेगरी के अंदर इसमें से कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिवीजन को बेसिकली ये अवार्ड दिया गया है. दैट इज द 2023 ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज. जल्दी जल्दी बताइए मुझे चैट बॉक्स के अंदर क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टीम? दैट टीम इज बेसिकली बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, दैट इज बिट्स पिलानी इन राजस्थान इंडिया, जिसको ये अवार्ड मिला है इन द प्रोजेक्ट रिव्यू अवार्ड कैटेगरी. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द इंडियन गोल्ड मेडल ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, हु हैज क्लेम्ड द टॉप स्पॉट इन द javelin event of Doha Diamond League. But the question is not on any other thing, it is basically on the length of throw which he has achieved during this particular event in this particular league, and the right answer, the right length for that is 88.67 meter. That is the right answer. Next question guys, next question is from the important days, and whenever you find a question on important days, there are two important dimensions. First one is the date, द सेकेंड वन इज एग्जैक्टली द थीम. तो आपके सामने क्वेश्चन ये है कि थीम क्या है इस पर्टिकुलर डे की और डेट क्या है इस पर्टिकुलर डे की. सी, एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों ही थीम्स पर, दोनों ही डायमेंशंस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड द डे हियर इट इज इन न्यूज इज इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ. सो इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ की थीम क्या है, डेट क्या है, ये आपको बताना है. so, जब हम बात करते हैं इस डेट की, सो इट इज बेसिकली बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन ऑब्जर्व्ड ऑन 5th of May. और जब हम बात करते हैं थीम की, इट वाज टुगेदर अगेन फ्रॉम एविडेंस टू रियलिटी, एंड दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. Next question. So which state has become the first state to make digital health cards for the children? तो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड्स लॉन्च करने वाली वो इंडिया की पहली स्टेट कौन सी है? याद रखिएगा, द नेम ऑफ दैट स्टेट इज उत्तर प्रदेश, विच इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द नीति आयोग. सो नीति आयोग ने रिसेंटली इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक कंपेंडियम निकाला है, विच इज अ कंपाइलेशन ऑफ 75 इनिशिएटिव्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज इन द सोशल सेक्टर. इसका नाम है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द सोशल सेक्टर, अ कंपेंडियम 2023. आपके सामने क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है. द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, विद व्हिच दिस पर्टिकुलर कंपेंडियम हैज बीन लॉन्च्ड. And guys, I really believe that all of you have really given me the right answer, absolutely right. All the people have given me option C as the right answer to this question, and it is option C. So guys, this is the right answer. Let's move on to the next question. So Defense Minister Rajnath Singh ने inaugurate किया है first of its kind Indian Air Force Heritage Center. तो guys, पहली बार इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर ओपन हुआ है. कौन सी लोकेशन पे हुआ है ये याद रखना काफी जरूरी है. कोई भी चीज पहली बार होती है तो उसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है. एंड हियर व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर इज, इट इज ऑप्शन डी, दैट इज चंडीगढ़. So some students are basically talking about the question number 24, that there was some issue with the answer. So let us see that. So guys, here the question is basically on the theme. So आप सभी को एक confusion है, that is about the date. So guys, do not worry about it. I will just look into it. Do not worry, and we will I will just post a comment after the end of the session. So do not worry. Let's focus on the next question of this particular session. And we have already covered the question number 27. The right answer to this particular question was Chandigarh. Now let's move on to the question number 28. And the next question is, यहाँ पर आपको मुझे बताना है उस फर्स्ट इंडियन एयरलाइन का नाम विच हैज ऑपरेटेड अ कमर्शियल डोमेस्टिक फ्लाइट ऑन अ वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट यूजिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. सो गाइस, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की हम बात करते हैं जो कि जिसको अडॉप्ट कर रहे हैं सभी. तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, वो पहली इंडियन एयरलाइन जो बनी है to operate a special commercial domestic flight on this particular SAF. So name of that particular airline is Vistara, and all the people have given me the right answer. That is option B, Vistar. Vistara is the right answer to this question. So Vishal, Arunav, Kumari, Diksha, Seraphic, everybody has given me the right answer to this question. Now let's move on to the next question, guys. And the next question is on
in this question you are required to identify and tell me the name of this particular platform जिसने इंट्रोड्यूस किया है CVV free tokenized transactions for the domestic payments in India. See guys, we all know that we are always required to enter our card details during a transaction और उसके टाइम पे हमसे पूछा जाता है CVV which is a 3-digit number that is a cash verification value. तो ये जो CVV free tokenized transactions यहाँ पर इन्होंने लॉन्च की है और आपको बताना है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने इसको यूज किया है, एंड इट इज एब्सोल्युटली वीजा which has basically started this particular initiative and this is also kind of very important initiative guys और ये काफी यूनिक इनिशिएटिव है तो इसको याद रखना काफी जरूरी है from the exam point of view. Now let's move on to the next question. So guys, next question is basically on the भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड. तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड इसमें से कौन सी पर्सनालिटी को रिसेंटली दिया गया है, दैट इज द क्वेश्चन. एंड आई रियली बिलीव कि ये काफी इजी क्वेश्चन होना चाहिए आप सभी के लिए, बिकॉज हम देख सकते हैं कि रिसेंटली जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को फियर फ्री बनाने के लिए वो कौन सा पर्सन है जिसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, दैट इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड दैट इज द राइट आंसर to this particular question, who has been given the Bharat Ratna Dr. Ambedkar Award. That is the right answer. Next question guys. So Indian Navy has decommissioned dash on May 6th the oldest landing ship tank after 36 years of service. तो इनमें से वो कौन सा हमारा oldest landing ship tank है जिसको recently decommission किया गया है from the naval base in Kochi. The name of that particular tank is INS Magar, which is the right answer. It was launched in 1984 by Mira Tahiliani and it was commissioned in 1987. Next question. Indian Air Force has received the first batch of indigenous loitering munitions, and here guys you are required to tell me the name of entity which has developed this particular part. तो मुझे जल्दी से बताइए वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको डेवलप किया है. एब्सोल्युटली इट इज टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड जिसने कि इसको डेवलप किया है. दिस इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो IAF's first C295 for India has completed its maiden flight in Spain. The first 16 aircraft of the type are being made in Spain while the following 40 are to be manufactured in Gujarat. See, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो पहले 16 एयरक्राफ्ट हैं इस टाइप के दे विल बी मेड इन स्पेन, बट जब हम बात करते हैं रिमेनिंग एयरक्राफ्ट्स की तो ये कहाँ पर बनेंगे, दे विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन गुजरात. बट इसको कौन मैन्युफैक्चर करने वाला है, द क्वेश्चन इज ऑन दीज लाइंस, एंड एब्सोल्युटली वंस अगेन द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज वो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड एंड एयरबस विच आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर इट कलेक्टिवली. Next question. So here guys, which one of the following entities has recently organized the Ekta Evam Shraddhanjali Abhiyan, which is a multimodal expedition? तो एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान इसमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? The question is all on these lines and it is a very easy question guys. It was being launched by the Border Road Organization. ठीक है जी. तो Border Road Organization Day was being celebrated on 7th of May and it was a part of the celebration for this particular day. Next question. So here once again you are required to identify the name of the organization. ठीक है जी. तो आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन के अंदर है दैट इज द नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी जो कि एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है एंड इट हैज कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ द म्यूचुअल फंड बिजनेस ऑफ वन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस. और यहाँ पर आपको कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है एग्जाम से, एग्जाम के अंदर नहीं आएगी ये कॉस्ट. बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसने एक्वायर किया है और किसको एक्वायर किया गया है. ओनली दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगर हम बात करते हैं कि किसके बिजनेस को यहाँ पर एक्वायर किया गया है, इट इज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस whose businesses have been acquired by the next billion technology, and that is the right answer guys. And now let's move on to the next question. So here the next question, you are required to identify the name of the personality who has become the first athlete. See guys, the question is on the first athlete. So once again कोई चीज पहली बार हुई है, कोई पर्सन पहली बार एक ऐसा एथलीट बना है, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज बिकम द फर्स्ट एथलीट टू स्कोर बोथ द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड एज वेल एज द लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड इन द सेम ईयर. तो दोनों ही अवार्ड्स उन्होंने सेम ईयर में जीते हैं एंड दैट्स व्हाई इट हैज बिकम द फर्स्ट एथलीट फॉर द सेम, एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन इज लियोनेल मेसी हु हैज रिसीव्ड दिस पर्टिकुलर अवार्ड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एंड हियर यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द बैंक. आइडेंटिफाई कीजिए उस बैंक को जिसने रीडोमिसाइल किया है एल्केमी इंडिया लॉन्ग टर्म फंड को फ्रॉम द मॉरिशियस टू इंडियाज गिफ्ट सिटी.
And guys, here when I talk about the name of that bank which has achieved this particular feat, it is Kotak Mahindra Bank. That is the right answer to this question. Kotak Mahindra Bank is the right answer. Now next question. So Union Minister for State of Health and Family Welfare has launched the third phase of Thalassemia Bal Seva Yojana. और ये जो योजना है, it has been launched by the Health Ministry and it is supported by one of these organizations which are mentioned in the options, and you are required to identify that particular organization जो कि इसको support करती है as part of their CSR initiative, that is Corporate Social Responsibility Initiative, and the name of that particular organization is कोल इंडिया लिमिटेड. दिस इज द राइट आंसर. सो हम देख सकते हैं कि हमने आज के सेशन में ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं जहां पर एमओयूज हैं, पार्टनरशिप्स है, जहां पर दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर कोई काम करने वाले हैं. सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट टू बी कवर्ड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज वी हैव सीन such kind of questions in the previous year exams. Now let's move on to the next question, guys, and the next question is on the Project Smart, and here it states for station area development along Mumbai Ahmedabad high speed rail. So guys, Ministry of Housing and Urban Affairs and the Ministry of Railways इन्होंने एक MOU साइन किया है, और इसमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ ये MOU साइन हुआ है for this Project Smart. So this is a very easy question, guys, and you are required to tell me the right answer in the comment section. So Project Smart की बात की जाए, इसके लिए जो MOU साइन हुआ है between MoHUA, Ministry of Railways and the Japan International Cooperation Agency. So these are the three organizations which have signed MOU for the Project Smart. ठीक है जी, I hope this is clear to all of you, and now we are moving towards the last question of our today's session, and here guys you are required to tell me the name of the state which has become the first state to enforce right to walk. So right to walk को enforce करने वाली first state, that means जितने भी roads बनेंगे वहां पर आपके चलने के लिए एक अलग से फुटपाथ होना चाहिए और साथ में साइकिल्स के लिए ट्रैक्स होने चाहिए. दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर स्टेट हैज रिसेंटली enforced, and that is why it is called right to walk, and it has become the first state, and the right answer is option D, that is Punjab, and it is made mandatory for all the road owing agencies including the National Highway Authority of India, under which they are required to provide footpath and cycle tracks in all the future expansion of roads. And guys, that was the last question of our today's session, and now you are required to tell me that what exactly your scores are out of 40 in this particular session. Please tell me your scores in the comment section. Do give me your feedback as well about the session as well, that whether you liked the session or not, how exactly it was, and whether you were able to cover all the questions in a quick manner or not. So guys, if you are still new to our YouTube channel, kindly subscribe it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us. And if you want to एक्सेस द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन, आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन का, क्योंकि हम देखते हैं काफी सेशंस में स्टूडेंट्स करते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा. तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे. काइंडली ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर. एंड नाउ प्लीज टेल मी that what exactly your score are. So Bishal is saying that 44. So Bishal, questions तो 40 ही थे, so how have you scored 44? So I really believe that all of you have liked this particular session, guys, and if you have any kind of queries, you can just ask me your queries. And if you are watching the session later, so you can just post your comments in the comment section. You can post your queries in the comment section, and you can also give your comments, as well as you can also post your queries to the hello@edutap.co.in, and I will be resolving your queries. And you can also call us at 814-620-7241. So I can see here that most of the people have scored 34, 35. That's really a good score, guys, and that is really a very good score. That means, that shows that your preparations are on a very dry track, and you have to keep up the momentum so that you can ace the exam, just like you have aced in this particular session. So do not worry, guys, I will be telling you about the 24th question as well. Do not worry about it. I will be posting a comment after the session. So I think that there are no more queries here, so we can conclude this particular session. So guys, thank you for joining us. We will miss you. I will be here with another session next week as well on the Saturday, and let's meet next week at 1 p.m. sharp with the top 50 MCQ session. Till then, stay happy, stay healthy.